So date and time is very important, more so when you are also seeing the serial x-rays. Am I clear with all of you? Say yes. Bolo. Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please, you know what? I can't see you guys. So you guys have to cooperate. You have to go on telling this. Otherwise, मेरे से नहीं ली जाएगी ये क्लास. ठीक है ना? Okay. So now see, अब आपको एक्सरे में क्या होगा? Somebody is just going to, uh, give you a film. Look, read it. So now what it is important is you should know how to hold the x-ray properly. Fine. तो आपको you have to know what type of x-ray it is and how you're going to hold it also. तो type जानने के लिए, to know what type of film it is, see, if it is a PA view means that now is picture mein you can see this guy, the rays are coming from the posterior aspect and the cassette is in the front. Now this is basically a standard chest x-ray, right? Then this is a PA view which you are seeing right in front of you. Okay, if I put my finger on the x-ray, can you see my finger? Yes, no? ये ऐसे दिखता है? Yes, ma'am. Yes. You can see this Yes, red ma'am. dot if I'm moving my Yes, ma'am. cursor. Yes, ma'am. Yes, Okay, yes, fine. ma'am. Good Yes, then, ma'am. good then. Good. That makes my life easy. Okay, so now see, this is a PA film. How you going to differentiate it from other films? I'm going to tell you. Right. Now, in an AP film, these are basically, emergency x-rays where patient cannot stand. So they're usually in a supine position. And your films, the rays, they are coming from the anterior aspect and the cassette is is on the posterior aspect. Okay. So this is an AP film. Now, how the hell do I differentiate whether it is a PA film or an AP film? Now, if you will see in most of the X-rays, they are usually PA films, but uh, uh, and they are even marked PA or AP. Like say this X-ray is marked as AP, but it may not be so. Ki they mark, they may or they may not mark, right? So how you differentiate is you see this. ये scapula दिख रहा है? ये जहाँ पे मैं red line डाल रही हूँ. Can you all see? Yes, bolo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. One of you take the Yes, ma'am. responsibility of saying yes. Okay. So this is the scapula, right? So scapula is basically lying over the lung fields in an AP film. और इसमें देख रहे हो इस वाली film में the scapulae कहाँ गया? Scapulae are not lying over the lung fields. That is number one. Fine. Secondly, क्योंकि PA films है erect film ना, यहाँ ये देखो ये gas bubble दिख रही है. I'm putting the cursor there. You can see the gas bubble, Yes, stomach yes, bubble. ma'am. हाँ, because क्योंकि ये erect होती है ना, तो most of the times you may get to see these things. They may be there or they may not be there, but they're just indicators which will guide you towards it. Now, so this stomach bubble right out here is going to tell you that this is a PA film क्योंकि वो standing position में है, और AP film में you cannot see that stomach bubble. Another thing is that in a AP film you can see the ribs na, they're almost horizontal, or oblique. PA film में they are more oblique. And one major difference is that in an AP film, ये heart देखकर heart appears more magnified as compared to the PA film. ठीक है? Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, fine. AP film ना बहुत कम distance से rays जाती हैं. 40, I think ये the difference I think is about 40 inches for an AP film, or 72 inches का difference होता है PA film में. Anyhow, basically you have to know that heart is a bit magnified on an AP film while you get the proper size on a PA film. Okay, so are we clear on the differences between AP film and a PA film? Yes, Somebody ma'am. has to say Yes, yes. ma'am. See, if you're not clear, if any one of you is not clear and wants to ask, then please आप अपने आप को unmute करके interject, say, so that I can at the same time help you out. Okay? Otherwise, I assume that one person who is saying yes for all. Okay. So now another view, X-ray view, is the lateral radiograph.
Okay. Now, lateral radiographs, they are very good for, giving a thoracic view of a thoracic spine. And, when combined with the frontal view, you get a kind of a, a 3D kind of a representation of whatever pathology that you are, seeing. Then other views are this lateral decubitus view, in which a person is lying on the either side, and this is a very beautiful view for getting to see the effusions, fluids. And say to check for an effusion, you should say if it is a AP, it's a frontal view, standing position, you need at least 100 to 2, you need about 200 ml of fluid to in the pleural cavity to appreciate, while in a lateral view about 75 ml of fluid you can appreciate, but in lateral decubitus view you can appreciate even lesser amounts, half the amount, around 30 ml of fluid also perhaps you will be able to appreciate. So these are very good views for checking on to your effusions, right? Okay. Now, other views that are the apical view, and these are apical view and lordotic view and oblique view. Now, basically, these views, apical, lordotic, oblique, they are very uncommon kind of views, and they are uncommon views, but they are directed to identify certain pathologies. In an exam, by and large, you are not going to get a lordotic, apical, or an oblique view. All you're going to get is PA, AP, lateral. Okay, or it may be a decubitus view. So these views, but you should know that yes, there are other views to identify pathologies at various areas of the lung. Now, when you are holding an X-ray, you need to hold it correctly, right? So, how do you know what is the right and what is the left side of the patient? Okay, we have this markings on the film, which will tell us this is left, this is right. But radiographer might have put these markings incorrectly. So whenever there is doubt, you need to check your patient. Another thing is that heart by and large is there on the left side, but it could be a dextrocardia, it could be some pathology which is pushing or pulling the mediastinum, and is so that is the thing that you always need to keep in your mind. And whenever you have a doubt, please don't hesitate in examining the patient. Okay. Now, among the markers, this is a very interesting marker. If you just see this, ये ऐसे रिंग सी दिख रही है, इसके अंदर ना ये beads हैं, ये red beads. तो ये क्या है? These are markers that will even help you know the position. जैसे whether the patient is lying down or the patient is standing. जैसे if the patient is standing, these beads by virtue of gravity ये यहाँ नीचे रहेंगी. कोई supine होगा तो ये beads ऐसे यहाँ बीच बीच में घूमेंगी. So you will be able to know whether the person is standing or the person is supine. So these beads, they also help to tell you the position of the patient. Okay, so are we all right till here? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Okay. So now the next most important thing that we need to do is we are doing the technical quality of the film. Now in the technical quality of the film, you have the submnemonic ripe. तो हमेशा पहले क्या याद करना है, हमें क्या देखना है, हमें डिटेल्स पता होने चाहिए अपने पेशेंट के. We have to confirm the film. Then we have to go for the technical quality, in which you're going to do rotation, inspiration, picture, and exposure, penetration. Okay, so these are the things that we are going to see, because we want to now say ki ha, by this is a X-ray of Mr. So and so, ate this and this, taken on this a PA film or an AP film, and hold it properly. Okay, and then you have to talk whether it is a good quality film or not. So what is the quality? Whether it is rotated or not rotated, what type of film it is inspiratory film or it is an expiratory film, whether it is a complete picture or an incomplete picture, how the hell was the penetration exposure? Is it too exposed film, or is it an underexposed film? Okay. So how do you identify rotation?
Now to identify rotation, ये देखो. Now what you do is ये जो ये येलो लाइन दिख रही है, ये सवाइक, ये स्पाइनस प्रोसेस के बीच में एक हम एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. Then you look at the medial ends of the clavicle, those two red lines that you are seeing by the side. Now, if these two lines are equidistant from the yellow line in between, that means there is no rotation. Okay? I'm waiting for a yes. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So now, if now you look at this film, यहाँ पे if you see the spinous process जो है, it is closer to the right clavicle. ये देखो, ये yellow line और इस red line में there is less distance, और इस yellow line और इसमें ज्यादा distance है. They are not equidistant, right? Yes, ma'am. Okay. Yeah. हाँ. Oh, yes, ma'am. That means this is a rotated film. Okay, so if the spinous process are closer to the right clavicle, that means the patient is rotated to their own left side. अब ये सब तुमको खुद हिल करके देखना पड़ेगा कि इमेजिन करो कि तुम if you are rotated to your own left side, so you see how it is moving. ठीक है, that you will have to imagine. अब मैं ये offline class में is a little difficult for me to get that. Now फिर ये okay. एक मिनट. हाँ, नाउ इसमें इन द लो फिल्म यू सी यहाँ पर मिड लाइन से यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस इज लेस एंड ऑन द राइट साइड द डिस्टेंस इज मोर. So that means the spinous process are closer to the left clavicle, so the patient is rotated towards their own right side. So this is how you are going to make out कि हाँ भाई ये rotated film है या ये ठीक ठाक film है. Okay, now in this film you see, इस फिल्म में ये ऐसे अपीयर तो रोटेटेड सा लग रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा, बट दिस इज एक्चुअली देयर इज अ spine deformity in this. Right? This is not a rotated film, but because of the spine deformity, it is appearing so. So this is what you have to keep in mind, that there can be a spine deformity. तो ये आप इसको midline से tips को देखो, because as such देखो तो आपको लग रहा है ये क्या घुमा हुआ है, but it is not so. यहाँ पर it is both are not rotated films. Now next it is whether it is an inspiratory film or taken during expiration. अब ये देखो anterior ribs, ये anterior ribs, ये देखो I'll just go through. ये anterior rib है, एक दिख रहा है ना, ये दिख रहा है. Yes, ma'am. ये फर्स्ट, ये देखो ये सेकंड एंटीरियर रिब है, ये थर्ड एंटीरियर, फोर्थ एंटीरियर, फिफ्थ एंटीरियर, सिक्स्थ एंटीरियर. सो इफ यू आर एबल टू सी 5 to 6 एंटीरियर रिब्स अबव द डायफ्राम, ओके, और ये देखो ये पोस्टीरियर रिब्स है, ये एक, ये दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, this one 8, 9. So now you are able to see 9 to 10 posterior ribs above the diaphragm, or 5 to 6 anterior ribs above the diaphragm. You say rest assured this is an inspiratory film. If you are not able to see these many, they are less, that means it's an expiratory film. Now see, this one is expiratory and this one is inspiratory. ठीक है? Okay, then next most important thing is the picture. Now, are the lung fields, are you able to see the entire lung fields? So, इसमें दिख रहे हैं? कौन आंसर करेगा? Somebody answer me. I'm waiting. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें पूरे दिखे. Okay, फिर दूसरी वाली में जो उसके साथ है, मैम एपेक्स कट है उसमें, एपेक्स नहीं दिख रहा एपेक्स भी कटा हुआ है और लेफ्ट जो है कोस्टोफ्रेनिक एंगल भी पीपी एंगल है ना. तो ये वाली कंप्लीट है नहीं ना. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट शुड बी अ कंप्लीट पिक्चर. तो इस पिक्चर, इस एक्सरे की पिक्चर क्वालिटी इज नॉट गुड, है ना. इस वक्त की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी कितनी ब्यूटीफुल है. यस मैम. है ना. यस मैम. ओके, यस मैम. नाउ यू हैव टू सी कि भाई ये ओवर एक्सपोज फिल्म है या ये अंडर एक्सपोज फिल्म है या ये जस्ट राइट है. ठीक है. ओके, नाउ एक्सपोजर देखने के लिए व्हाट यू सी इज ये जो रेट्रोकार्डियक एरिया है ना, ये रेट्रोकार्डियम, इस एरिया में अगर आपको ये वर्टिब्रल बॉडीज आर जस्ट विजिबल थ्रू द कार्डियक शैडो, दैट मींस इट्स एन एडिक्वेट पेनिट्रेशन. ठीक है. अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ तो बिल्कुल विजिबल ही नहीं है, दैट मींस दिस इज अंडर पेनिट्रेटेड. और यहाँ पर इतना डीपली वो है, हार्ट भी लूज, ये सारा मतलब
जो है हार्ट भी रेडियोलूसेंट लग रहा है एंड लंग्स आर अपीयर सो डार्क, सो दिस इज एन ओवर एक्सपोज्ड फिल्म, ओवर पेनिट्रेटेड फिल्म. ठीक है. सो नाउ वी हैव फिनिश्ड द डॉक्टर DR. नाउ इज S इज फॉर द सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन. तो अब एक एक्सरे चेस्ट में अगर देखा जाए तो सॉफ्ट टिश्यू तो ठीक है, यू नो, बट बोन्स कौन सी देख सकते हैं, यू नो, दे आर क्लैविकल, स्कैपुले, थोड़ा सा thoracic vertebrae, humerus के भी, you know, a portion of that you can see, if at all. So you have to look for the bony part and you have to look for any soft tissues deformity, bony deformity, whether there's any fracture, whether there's lytic lesion or whatever it is, or there are some extra cervical ribs, or there are some missing bones, whatever. On soft tissue and bone, you have to see. Now, who is going to answer me this? What is the soft tissue abnormality that you are seeing here? What is the abnormality? Koi bolo. ये बहुत डिफिकल्ट है क्या? तो स्पॉट है. दिस इज अ स्पॉट टेस्ट. Ma'am, my patient is obese. ये ओबीस नहीं है. ये क्या है? ये सारा कुछ घिच 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 घिच. ये स्पॉट डायग्नोसिस है. भाई लड़कियां कहाँ है इस बैच में? मुझे दो मेल वॉइसेस ही सुनाई दे रही हैं बार बार, यस मैम, बाकी सारे सो गए क्या? हाँ, वेयर आर द रेस्ट ऑफ यू? कम ऑन, टेल मी व्हाट इज दिस. हाँ, वेयर आर यू? You know what, I'm not going to take a on offline class because ऐसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा how many of you are with me, how many are not there. Surgical anesthesia. Excellent. Who is that? बेटा नाम बताओ ना. बिल्कुल ठीक आंसर बताया है. Who said that? Hello? 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 Can you hear me? Hello? Yes, ma'am, we can hear you. Okay, so who said surgical emphasis? No, you not answer. Huh? Who replied surgical emphasis? हाँ? अरे बिल्कुल ठीक आंसर दिया था. I just want to say who said कि this is surgical emphasis. Ma'am Manu. Ma'am Manu. Anu. हाँ. Okay, good. Very good. Okay. Thank you. Excellent. This is surgical emphasis. No doubt about it. ठीक है? All right. Now, what is the soft tissue abnormality? Soft tissue and bone. Okay. What is the abnormality in this film? Who's going to tell me that? Just concentrate on soft tissue and bone. Okay, see. यहाँ पर ये क्या कुछ दिख रहा है? यहाँ कुछ दिख रहा है प्रॉब्लम? यहाँ दिख रही है प्रॉब्लम? बोलो. Yes, ma'am. Subpleural calcification. बेटा ये कैल्सिफिकेशन नहीं है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स है. These are ये multiple white rib. ये वाइट नहीं बेटे, ये देख, ये these are multiple rib fractures. ये continuity टूटी हुई है ना. There's a Yes, break ma'am. in continuity. So these are multiple rib fractures. Okay. Now, next that now after DRS, what we come to doctors, what we come over to is airway and mediastinum. Okay. Now in airway, what you're going to see is whether the trachea is in the midline, whether it is patent, whether there is any, you know, stenosis, compression, the carinal angle, and whether there's, you know, any extras like tracheal tube, foreign bodies, tracheostomy, stuff like that. अब ये देखो, ये दिख रहा है ट्रेकिया?
यहाँ आया हमारा कैराइना, ये हो गया आपका राइट ब्रोंकस एंड आई एम कमिंग, दिस इज द लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है, एंड दिस इज द कैराइना. ओके, कैन यू ऑल अप्रिशिएट इट? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, is the trachea in midline? यार मैं 5 बजे तक नहीं ले रही हूँ एक क्लास, इसलिए जल्दी बता दो, ठीक है ना? ये कोई बहुत क्वेश्चन नहीं मैं पूछ No, रही ma'am. हूँ, हो रहे हो? हाँ क्या है बताओ? Not in midline. Not in midline. हाँ, it Right is, side. हाँ, राइट नहीं, लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट. This is left side. हाँ, तो it is pulled towards the left side. Probably there is a atelectasis over here. This whole lung is collapsed and it is pulling the trachea towards that side. Okay. Yes, And what ma'am. about here? Right side deviated. हाँ, and there is Right some, side पे deviated हाँ, है. यहाँ पे ये swelling सी दिख रही है ना, perhaps कोई there is some tumor, thyroid, whatever, some swelling which is pushing it towards the right side. यहाँ पे, यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिख रही है इस एक्सरे में? Narrowing of the air vein. हाँ, क्या Tracheal बोलते हैं? stenosis. हाँ, narrowing of the वेरी गुड, tracheal stenosis. गुड. यहाँ पे मीडियास्टाइनम, बी सेड ए इज एयरवेन मीडियास्टाइनम, ये ठीक लग रहा है इसका मीडियास्टाइनम? Mediastinal mass. Widened mediastinum. वाइडेंड मीडियास्टाइनम, एक्सीलेंट. Widened. दिस इज अ नॉर्मल ऑफ मीडियास्टाइनम. नॉर्मल कितना होता है? अराउंड 40 to 60 millimeters होता है. And here you can definitely see mediastinal widening, and it really calls for, you know, further investigation. You need to know whether there is a rupture aorta, dissection, what the hell has happened, whether it is mass, whatever it is, you need to get the patient further evaluated. यहाँ पर also you are seeing that there is a mediastinal mass over here, है ना? ये दिख रही है ना? कहाँ गया यार ये? तो हाँ, ये रहा, ये दिख रहा है ना, ये मास. Okay, all right. Now next, coming over to B, that is breathing, where we are going to scan the lung. So you are going to scan from the apex to the go down, and you have to compare the left and the right lung all at the same level. अब compare करने के लिए ना, to make life easy, हम ना divide कर देते हैं into radiological zones, upper zone, middle zone और lower zone. upper zone जो है लोअर बॉर्डर ऑफ सेकंड एंटीरियर रिब, ये फर्स्ट एंटीरियर है, ये सेकंड एंटीरियर यहाँ पे, ठीक है, और मिडिल जोन इसके बीच में, एंड लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ एंटीरियर रिब के बीच में, ये मिडिल जोन, ये अपर जोन, ये मिड जोन, और इसके नीचे से आ गया हमारा राइट लोअर जोन. ओके, यहाँ ठीक है, ये देखो यार वो आ ही नहीं रहा. हाँ आ गया. ये देखो, ये हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये एंडोट्रेकियल ट्यूब का टिप है, ये देखो, ये वाइट, ये ऐसे जा रहा है, और ये कैराइना है, ठीक है. तो यहाँ पर राइट एंडोब्रोंकियल ट्यूब होने की वजह से ये पूरा लेफ्ट साइड के ऊपर वो हो गया है, कोलैप्स, ठीक है. तो कई बार क्या होता है, अगर हमारी राइट एंडोब्रोंकियल इंटुबेशन हो जाए तो एक तो लेफ्ट साइड पे कोलैप्स हो जाती है, टेलेक्टेसिस हो जाती है लंग में, प्लस कई बार राइट साइड पे ओवर इन्फ्लेशन की वजह से टेंशन न्यूमो भी हो सकता है, ठीक है. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव योर ट्रेकियल ट्यूब प्रॉपर्ली प्लेस्ड. अब यहाँ पर ये देखो ट्रेकियोस्मी ट्यूब, ये ट्रेकियोस्मी ट्यूब दिख रही है ना? सो इसका भी जो टिप है, जो भी ट्रेकियल ट्यूब है, इट्स टिप शुड बी 3 to 5 सेंटीमीटर्स अबव द लेवल ऑफ कैराइना, ठीक है. अब ये क्या है यहाँ पे में सेंट्रल वेनस कैथेटर, ये दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. देखो ऐसा है, और यहाँ पर ये कैराइना दिख रहा है, ये देखो, ये ट्रेकिया है. कैराइना ढूंढने के लिए ना, अगर बाय चांस कभी तुम्हें कैराइना ना मिले ना, तो क्या करो, ये एक ब्रोंकस पे चलो, कहाँ गया ये ब्रोंकस पे चलो, उसको ऊपर ऊपर चलो, जहां वो दूसरे को मिलेगा, ये रहा, ठीक है, या यहाँ से चलो, ये रहा, ठीक है, ऐसे भी ढूंढ सकते हैं. तो ये एट द लेवल ऑफ कैराइना ना हमारे पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन होता है. तो ये जो है ना हमारी सुपीरियर वेना केवा में होनी चाहिए, लोअर 1/3 ऑफ सुपीरियर वेना केवा, ठीक है.
समटाइम्स इवन टू इनटू द राइट केवोएट्रियल जंक्शन, जैसे अगर हम ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए डालते हैं ना, जैसे डायलिसिस कैथेटर या कीमोपोर्ट्स के लिए डालते हैं, तो वो यूजुअली हम केवोएट्रियल जंक्शन पे डालते हैं, विच इज अबाउट 2 वर्टिब्रल बॉडीज बिलो द कराइना, यहाँ तक, ठीक है। तो ये अदरवाइज हम जो है एट द लेवल ऑफ कराइना तक वी आर हैप्पी, बट अगर हमें और केवोएट्रियल में जाना है तो 2 वर्टिब्रल बॉडीज तक, ठीक है। और उससे ज्यादा अंदर चले गए तो फिर तो बस हो गया काम। क्या हो गया? ओहो, ये क्या हुआ? ये वेट अ मिनट, अब प्रॉब्लम स्लाइड शो, हाँ ठीक है। अब क्या करूं? ये हाँ, अब इसमें दिख रही है, ये देखो स्लाइड शो फ्रॉम करंट, हाँ इसमें ये दिख रहा है बेटा, ये देखो ये सेंट्रल लाइन कहाँ पहुंची हुई है, ऑलमोस्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर घुसी हुई है, ठीक है। तो इसमें ना एरिथमियाज वगैरह के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये क्या डिवाइस है पता है? ये क्या डिवाइस है बताओ? पेस में पेस कीमोपोर्ट, मेकर नहीं है, ये कीमोपोर्ट है, ठीक है। ये कीमोपोर्ट है, कीमोपोर्ट पेस मेकर दिखाती हूँ तुमको। ये देखो, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये देखो, ये एयरवे, एक सेकेंड, ये देखो ये एयरवे ट्रेकिया है, ये राइट ब्रोंकस है, ये कैराइना था, ये लेफ्ट ब्रोंकस है, ये देखो ये लेफ्ट, ये कैराइना, ये राइट, ये ट्रेकिया। तो ये देखो ये पूरी ट्रेकिया के अंदर यहाँ घुसी हुई है, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है जो कि पूरे राइट ब्रोंकस में घुसी हुई है, और ये कैराइना है वाइट एरो, और ये पूरा का पूरा वो हो गया, एटलेक्टेसिस कोलैप्स हो गया, ठीक है। अच्छा, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, ये दिख रही है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब है? तो बेसिकली नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है, इट शुड बी इन गो इन द मिड लाइन, और ये जो हमारा ये होता है ना, ये स्पाइन और ये डायफ्राम का ये जो जंक्शन है यहाँ पर, ये यहाँ पे होता है हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो अराउंड 10 सेंटीमीटर बियॉन्ड द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन आपका टिप होना चाहिए, तो वो सेफली स्टमक के अंदर है, ठीक है। अब ये क्या है डिवाइस? ये क्या है? ये क्या है? ये पल्स जनरेटर है, पेस मेकर, ये है पेस मेकर का पल्स जनरेटर, और ये इसकी 2 लीड्स हैं, ठीक है। ये भी इसमें, ये देखो ये लीड यहाँ पे टूटी हुई है, देखो किंग है ना यहाँ, ये लीड फ्रैक्चर है इसका। ये क्या है? फॉरेन बॉडी। अब ये फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी, हाँ, अब मैंने लैटरल एक्सरे किया तो ये देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ये एयरवे दिख रहा है ना, ये अरे राम, ये एयर फिर से चला गया। एनीवे, तुमको दिख रही है ना ब्लैक शैडो, वो एयरवे है, तो फॉरेन बॉडी जो है वो ईसोफेगस में है, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा ये, अब क्लियर? हम्म। So all the यस मैम, all the in the E part we have covered till this, ठीक है। So अब जो भी तुम्हारे को एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हें इससे रिलेटेड आएंगे कि कोई तुम्हें पूछ सकता है कि ओके, अब पेसमेकर और आईसीडी में कैसे फर्क करोगे भाई? इम्प्लांटेबल कार्डियो डिफिब्रिलेटर और पेसमेकर सी बाय एंड लार्ज वो बिल्कुल सेम लगते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए ना, एक ये चीज याद रखो, जो आईसीडी होगा ना उसके अंदर एक कोई लीड ना थोड़ी वाइड सी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो डिफिब्रिलेट करने के कॉइल्स होते हैं, तो एक वाइडर होती है, तो वो वाइड सी एक दिख जाए और दूसरी नैरो दिख जाए तो सोचो कि ये आईसीडी होगा, ठीक है। ओके, Yes, ma'am. हाँ, so यस okay मैम, fine, so we end the class Yes, ma'am. here. Have you understood anything? Hmm? Yes, ma'am. Okay, fine, then we'll close. Okay, okay, bye. Thank you, ma'am. Okay, please end the meeting now. Thank you, ma'am. Okay, welcome.
एग्जिट